Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video lectures. This is lecture number 14 for class 2. The subject is English and the book is Oxford Reading Circle. I am your teacher Farhat Mubin. Here are contents of today's lecture. First of all, instructions will be given to you. Then we will discuss main points of the story. After that, reading of the unit will be done and I will explain it to you. After that, there will be dictation words and in the end, homework will be given to you. Instructions. I want all of you to be ready with full concentration. You need to take out your books and notebooks as well because you have to do some written work. For that purpose, you also need the stationery items like pencils, erasers and sharpeners. All of you must be supervised by your parents or elder siblings. Let's begin with the main points of the story. This is Unit 5. The name of the story is Constable Plod. This story is about a policeman and his name is Mr. Plod. He is a little bit fool. He is given the task to catch a thief. 4 photographs of the thief in different poses are sent to him. But Mr. Plod is so innocent that he is happy to catch 3 thieves and says one is still left. Dear students, here is the text of the unit Constable Plod. I am going to read this text for you, but before that I want all of you to take out your books and open page number 31. It is likely better to hold pencils in your hands so that you can underline the words that are new or difficult for you. It will help you to learn their spellings and understand their meanings clearly. Let's start the reading. Mr. Plod is a policeman. He lives and works in a small town. He is a nice man. Everyone likes him, but Mr. Plod is not very clever. In this paragraph, we are told about a policeman. His name is Mr. Plod. वो एक छोटे से टाउन में रहता है और वहीं काम करता है. वो बहुत अच्छा नाइस मैन है. हर कोई उसको पसंद करता है, लेकिन वो बहुत चालाक नहीं है. That means he is an innocent man. One day, in the big city close by, एक दिन शहर में, बड़े शहर में जो करीब ही था, the police caught a thief. पुलिस ने एक चोर को पकड़ा. Underline the words caught and thief. Caught means पकड़ा, thief means चोर. The police took the thief to the police station. पुलिस उसको पुलिस स्टेशन ले गई. The inspector at the police station asked the thief. वहाँ इंस्पेक्टर को अंडरलाइन करें. ये भी पुलिसमैन होता है लेकिन थोड़े बड़े रैंक का. उसने चोर से पूछा, What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? What is your address? तुम्हारा एड्रेस क्या है? How old are you? तुम्हारी एज कितनी है? इस तरह पुलिसमैन ने उसके इन्वेस्टिगेशन करते हुए क्वेश्चंस पूछे. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि आपके पेज के बॉटम पर ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. ये भी डिफ़िकल्ट और न्यू वर्ड्स हैं. आप इनसे भी हेल्प ले सकते हैं मीनिंग्स देखने के लिए, और इन वर्ड्स को जैसे थीफ, क्लेवर, इंस्पेक्टर, इनको आप लर्न करें फॉर योर डिक्टेशन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. This is page 32. The inspector was asking questions from the thief. Now he asked, Do you have a wife? Any children? अब उसने बीवी और बच्चों के बारे में क्वेश्चन किया.
He asked lots and lots of questions. उसके अलावा भी उसने बहुत सारे सवाल पूछे. He wrote down the thief's answers. और फिर चोर ने जो जवाब दिए उन्हें एक पेज पर लिख लिया. Then another policeman took lots of photographs of the thief. Underline the word photographs. This means pictures. तस्वीरें. एक दूसरे पुलिसमैन ने चोर की तस्वीरें ली. His camera went click click click. उसने ज़्यादा तस्वीरें ली और कैमरे की आवाज़ आई क्लिक क्लिक क्लिक. He took one from the front. उसने different poses की तस्वीरें ली. एक उसने सामने से ली and another from the left. एक left side से ली. Then he took one from the right. एक उसने right side की ली and another from behind. और एक तस्वीर उसकी back side की पीछे से ली. He took a photograph of the thief with his hat on. एक तस्वीर उसने हैट पहने हुए ली. चोर ने हैट पहना हुआ था उसके साथ ली. And other with his hat off. Hat off mean हैट उतरा हुआ था. और एक तस्वीर हैट उतरवा कर ली. But later that day the thief ran away. लेकिन ऐसा हुआ कि उस दिन चोर वहां से भागने में कामयाब हो गया. Ran away means भाग गया. Next on the page 33 is the inspector shouted, "Catch him," said the inspector. "Catch him," said the sub-inspector. "Catch him," said the sergeant. Inspector, sub-inspector और sergeant ये तीनों पुलिसमैन के रैंक्स होते हैं. Underline the word sergeant for spellings. ये तीनों चीखे कि पकड़ो पकड़ो, इस चोर को पकड़ो, ये भागने ना पाए. The constables ran after him. Constables यानी पुलिसमैन उनके पीछे भागे. But he was too quick for them. लेकिन वो बहुत तेज भाग रहा था. He escaped और वो भागने में फरार होने में कामयाब हो गया. Underline the word escaped. Ran away भाग गया और कांस्टेबल उसको पकड़ ना सके. They looked everywhere. उन्होंने उसको हर जगह देखा, तलाश किया. But they could not find him. लेकिन वो चोर उनको ना मिला. Some days went by. इसी तरह कुछ दिन गुजर गए. Then someone told the inspector that the thief was in Mr. Plot's small town. फिर एक दिन किसी ने इंस्पेक्टर को बताया कि वो चोर मिस्टर प्लॉट के छोटे टाउन में छुपा हुआ है. Get the photographs, shouted the inspector. Inspector shouted. Shouted means चिल्लाया, जोर से बोला कि जल्दी से photographs लाओ. Dear students, move to the next page. Next on page 33 is a constable brought 4 photographs of the thief. एक कांस्टेबल उस चोर की 4 तस्वीरें लेकर आया. Underline the word brought. This is second form of bring and bring means to carry, lekar aana. Take these immediately to Mr. Plot, said the inspector. Underline the word immediately. It means quickly, jaldi se. इंस्पेक्टर ने कहा कि इन तस्वीरों को जल्दी से मिस्टर प्लॉट के पास ले जाओ. So the constable took the photographs and raced off on his bicycle. Raced off को अंडरलाइन करें. इसका मतलब भी immediately है, quickly, जल्दी से या तेजी से. कांस्टेबल उन तस्वीरों को लेकर अपनी साइकिल पर जल्दी से गया, तेजी से गया. An hour went by. 1 घंटा गुजर गया. A whole day went by. Underline the word whole. Here W is silent and this word means complete. We read it whole. एक पूरा दिन गुजर गया. Then the inspector's telephone rang. फिर इंस्पेक्टर के टेलीफोन की बेल बजी. Hello, this is the inspector, said the inspector. इंस्पेक्टर ने कहा कि हेलो, मैं इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ. Hello, said Mr. Plot. I am Constable Plot. दूसरी तरफ से मिस्टर प्लॉट बोला, हेलो, I am Constable Plot. Dear students, here is page 34. I have seen the photographs that you sent me. मिस्टर प्लॉट ने कहा कि मैंने वो तस्वीरें देख ली हैं जो आपने मुझे भेजी हैं. Yes, yes, said the inspector excitedly.
इंस्पेक्टर ने excitedly कहा yes yes. Underline the word excitedly. This means very happily, जोश से, खुशी से. उसने ये समझा कि मिस्टर प्लॉट ने थीफ को पकड़ लिया है. Have you found the thief yet? क्या तुमने थीफ को पकड़ लिया? Yes sir, replied Mr. Plot. Mr. Plot ने जवाब दिया, Yes sir, I have caught 3 of the thieves and I shall catch the 4th one very soon. मिस्टर प्लॉट ने सोचा कि 4 तस्वीरें 4 मुख्तलिफ चोरों की हैं और वो बहुत खुशी से बता रहा है I have caught 3 of the thieves. मैंने उन चोरों में से 3 को पकड़ लिया है. Underline the word thieves. This is the plural form of thief. 3 को पकड़ लिया है and I shall catch the 4th one very soon. और मैं चौथे को भी बहुत जल्दी पकड़ लूँगा. This is very funny story. उसकी इनोसेंस या बेवकूफ़ी बताई हुई है कि वो एक ही चोर की तस्वीरें थी और मिस्टर प्लॉट ये समझ रहा है कि मैंने 4 चोर पकड़ लिए हैं, उनमें से 3 को पकड़ लिया है और एक अभी भी रहता है. इन द एंड हेयर इज़ द नेम ऑफ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी, निकोलस हॉसबर्ग. Students, I hope you have enjoyed the story very much. This is for your knowledge and this is also for your fun. किसी को इतना बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए कि उसको यही समझना लगे कि वो एक ही बंदे की 4 तस्वीरें हैं. Now come to the dictation words. Dear students, dictation is very important for you. It will increase your vocabulary. And secondly, this is an important question in your paper. I am going to read these words for you. These are 12 in number that are taken from the unit Mr. Plot. इनमें से काफ़ी सारों को हम अंडरलाइन कर चुके हैं और डिस्कस कर चुके हैं during reading. Listen them carefully. It will help you to learn quickly and also to understand the pronunciation and meaning. C-A-U-G-H-T, caught. T-H-I-E-F, thief. A-D-D-R-E-S-S, address. E-S-C-A-P-E-D, escaped. P-H-O-T-O-G-R-A-P-H, photograph. Here P-H is giving the sound of F as we have read in elephant. Constable, C-O-N-S-T-A-B-L-E, constable. स्टूडेंट्स एक छोटी सी टिप याद रखें कि लंबे वर्ड्स को आप डिवाइड कर लें छोटे वर्ड्स में और उसमें से ज़रूर कोई ऐसा वर्ड होता है जो आपने पहले भी पढ़ा होता है. फॉर एग्जांपल इन दिस टेबल, टेबल के स्पेलिंग आपको आते हैं, उससे पहले कॉन्स के याद कर लें. इट विल हेल्प यू टू लर्न क्विकली. 7th, excitedly, E-X-C-I-T-E-D-L-Y, excitedly. इसमें स्टूडेंट्स मोस्टली ये मिस्टेक करते हैं कि सी को मिस कर देते हैं. रिमेंबर टू राइट सी इन इट. नंबर 8, कैमरा, C-A-M-E-R-A, कैमरा. फ्रंट, F-R-O-N-T, फ्रंट. नंबर 10, shouted, S-H-O-U-T-E-D, shouted. Number 11, bicycle, B-I, by, C-Y-C-L-E, cycle. And collectively we will pronounce it bicycle. Bi means two, the cycle which has 2 wheels, bicycle. Number 12, inspector, I-N-S-P-E-C-T-O-R, inspector. So that's all for the dictation. Now I am giving you the homework. Students, you will write these words in your English neat copies and learn them by heart. This is your homework. I hope you have enjoyed this lecture. You need to revise it for better understanding. If you have any queries or questions, do ask me. I am always here to help you. Thank you very much. Stay home, stay safe.